सुभासिनी सुमधुर भासिनी सुखदं वरदं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। शुक्रिया, शुक्रिया, thank you so much. Well, the initiative encourages a lifestyle that focuses on mindful and deliberate utilization of resources and aim to change the present, use and dispose of consumption habits. इसीलिए मैंने कहा कि हम इन बातों को समझते तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें अडेप्ट कैसे करना है आज शायद इस मंच के माध्यम से आप भी समझ पाएंगे, क्योंकि जो आइडिया है इस खास कॉन्क्लेव का आज, उसके जरिए मैं ये आपके सबसे पहले सामने बात रखना चाहूंगी. The idea behind is to encourage individual to adapt simple changes in their daily life that can contribute to the climate change. आगे बढ़ रहे हैं हम और एक खास ये भी आपके सामने यहाँ से. कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं दरख्त सूख रहे हैं, कहीं विशाल पर्वतों की नींव खिसक रही है तो कहीं वनों के भीतर पनप रही है आग की ज्वाला. आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ बढ़ रहा है. भारत न सिर्फ ग्लोबल ग्रीन एजेंडा को तय कर रहा है बल्कि इस एजेंडे का नेतृत्व भी कर रहा है. ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. प्रधानमंत्री जी के ये शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने और इसी तर्ज पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत TV9 नेटवर्क ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से एक साझा अभियान की शुरुआत की, माई इंडिया माई लाइफ गोल्स. भारतीय संविधान के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करना हमारा मौलिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी है. इसलिए जरूरी है कि हम इसे अपना लाइफ गोल बनाएं और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें. 9 ग्रीन वॉरियर्स जिन्होंने अपना जीवन, अपनी महत्वाकांक्षाएं सब प्रकृति के नाम कर दी और 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा बने. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इन ग्रीन वॉरियर्स की कर्तव्य निष्ठा ने देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. डिजिटल दुनिया में #माई इंडिया माई लाइफ गोल्स को हमने एक ट्रेंड बनाया, जहां एक तरफ हम घर घर तक पहुंचे और पर्यावरण को बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव के सुझाव दिए. पर्यावरण को आपकी जरूरत है और कुछ काम करना चाहिए. तो दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज में युवाओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किए. तो आइए हम सब मिलकर आजादी के 75 साल मनाते हुए ये प्रण लें कि अपने पर्यावरण, अपनी धरती माँ को सदा हरा भरा रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक खुशहाल पर्यावरण की सौगात देंगे. माई इंडिया माई लाइफ गोल्स कॉन्क्लेव करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मकसद क्या है, ये इस एबी के जरिए तो आपको भी समझ आ गया होगा. लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरत होती है वॉरियर्स की, और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लाइफ गोल को हासिल करने के लिए देश को कुछ खास ग्रीन वॉरियर्स का साथ भी मिल रहा है. सस्टेनेबल लाइफ को लेकर इन्होंने जो लाइफ गोल सेट किए हैं वो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं. हमारे बीच देश के ऐसे ही कुछ खास ग्रीन वॉरियर्स भी मौजूद हैं और इन्हीं वॉरियर्स को अब मैं मंच पर भी बुलाना चाहूंगी, जहां सबसे पहले आपको बता दूं मंच पर हमें ज्वाइन करेंगे काना राम. लेकिन इन्हें हम क्यों ग्रीन वॉरियर कह रहे हैं, देखिए. प्लास्टिक इस धरती का दुश्मन है जिसको हमने अपने घर में पाल रखा है. नमस्कार आप सबका, मेरा नाम कानाराम मेवाड़ा है और लोग मुझे कांजी चाय वाले के नाम से जानते हैं. आज हमारी दुनिया में, हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के पहाड़ बनते जा रहे हैं. जहाँ तक कि बड़ी गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, नगर पालिका भी साफ सफाई का लिए कर रही है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. प्लास्टिक को लेके मैंने ये शुरुआत की कि सबसे पहले जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक, आपके घर से निकलने वाला चिप्स, दूध का थैली, कैरी बैग या कप, किसी भी प्रकार का जो भी पाउच होता है, रेफर या पानी का बोतल या तेल का पाउच, उनको हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया.
प्लास्टिक लाइए। मैं हर मंथली कभी स्कीम चेंज करता हूँ, जिसमें मैं कभी 1 किलो वेस्ट प्लास्टिक ला के दीजिए और आप आकर्षक इनाम पाइए। हर महीने मेरे पास 200 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक आता है और इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग मुझे ला के दे रहे हैं और मैं मेरे हिसाब से क्लीन अप प्रोग्राम भी करता हूँ। लोग एनवायरनमेंट को समझते, बाहर नहीं फेंकते। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अपने देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें कि आइए हम सब इस मुहिम में आगे बढ़ाएं और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। प्लास्टिक फ्री का संकल्प जिन काना राम मेवाड़ा ने लिया है, राजस्थान के ये रहने वाले हैं, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं और मैं चाहूंगी एक बार फिर से तालियों के साथ आप इनका मंच पर स्वागत करिए। आइए। ऐसे और भी ग्रीन वॉरियर्स हैं, उनमें इसी फहरिस्त में एक नाम है राजेश शुक्ला का। उन्हें हम ग्रीन वॉरियर क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। सुबह भोर में प्रातःकाल 5 बजे जब मैं अपने स्कूटर को निकालता हूं तो श्रमदान करके गंगा की तलहटी, गंगा के किनारों पर जो गंदगी है उसको सहेजते हैं, संभालते हैं और उसको कूड़ेदान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। पूरी टीम के साथ रोजाना 3 घंटा माँ गंगा के तट पर आकर माँ गंगा की आरती उतारना और लोगों को गंदगी न करने के लिए जागरूक करना, ये हमारी नियमित की दिनचर्या में शामिल है। आप सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन है कि गंगा किनारे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न करें। लोगों को बताया कि गंगा तट पर ये जो पॉलिथीन है, ये कपड़े हैं, ये सामग्रियां हैं जो गंगा के लिए हानिकारक हैं, उनको ऐसा न करें, ऐसा गंगा में विसर्जित न करें। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अमृत महोत्सव आज हमको सीख देता है कि हम संगठित होकर अपने पर्यावरण के लिए लड़ें और जब हम मिलकर यह साथ करेंगे, हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा भारतवर्ष भी आरोग्य भारत की ओर बढ़ता जाएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गंगा से गंदगी को दूर रखने का बीड़ा उठाया है राजेश शुक्ला ने, जो इस वक्त हमारे साथ है। मैं चाहूंगी आप ये हमें मंच पर ज्वाइन करें। ओके, तो ट्री मैन युवा साथी भी एक हमारे साथ हैं। इन्हें हम ग्रीन वॉरियर क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। 2011 में मैं चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ और वहाँ की हरियाली को देखा, इतना हरा भरा शहर को देखा और उसी समय मेरे भी मन में बीजारोपण हुआ। इस मातृभूमि के लिए, प्रकृति माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब पौधारोपण की शुरुआत की, युवाओं को जोड़ा, उसके बाद हर वर्ष 20-25 हजार पेड़ हम गांव में लगाते हैं और गांव वासियों को जोड़ते हैं। फिर 2020 में विश्व में कोरोना महामारी आई और उसको देखते हुए हमारे मन में ये विचार आया, अब गांव-गांव ऑक्सीजन बाग लगाए जाएं। इस तरह के हजारों भारतीय प्रजाति के पेड़ हों जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जो हजारों पक्षियों का आश्रय बनते हैं। और गांव वालों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जन आंदोलन बना। पेड़ लगाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, ये हम सब का कर्तव्य है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका मंच पर। हमारे साथ ये ग्रीन वॉरियर हैं और इनका संकल्प जानते हैं क्या है? इनका संकल्प है ऑक्सीजन बाग लगाने का। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए कैसी मेहनत करनी पड़ रही है। आज मैं चाहूंगी मंच पर इन्हीं के साथ में अब कुछ ही क्षणों में चर्चा की शुरुआत करने वाली हूं। इनका स्वागत तो हो ही रहा है, लेकिन मंच पर चर्चा से पहले मैं चाहूंगी आप प्लीज स्टेज को सेटअप कर दीजिए। और इस बीच जिस तरीके से इस खास इनिशिएटिव के तहत आज हम हमारे साथ जुड़े हैं, आजादी का ये अमृत महोत्सव है। प्रगतिशील भारत के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोग संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को तो हमेशा याद करते ही हैं। जश्न मनाने के लिए जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से कई पहल की गई हैं, उसमें आम लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और उसी सोच के साथ ये 3
ग्रीन वॉरियर्स हमारे साथ हैं। किस सोच के साथ इन्होंने ये शुरुआत करी, किस लक्ष्य के साथ ये आगे बढ़ते गए और किस तरीके से इनके छोटे छोटे प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम इन्हें ग्रीन वॉरियर्स कह रहे हैं, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्योंकि अब 15 अगस्त बहुत नजदीक है, हर घर तिरंगा की हम हर जगह चर्चा सुन रहे हैं। बता दें, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद से ही हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं, लेकिन पिछले साल जिस तरीके से हमने अमृत महोत्सव में बड़े ही भव्य रूप से जश्न मनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के हर घर में तिरंगा लहराता भी दिखा। और इस बार भी देश की 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी एक बार फिर से देश की आन बान और शान को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से हम सभी को हर घर तिरंगा फहराना है, उन ऐतिहासिक पलों को एक बार फिर से दोहराना है, एक बार फिर से हर घर तिरंगा फहराता हुआ देखने का बस पल आ ही गया है। लेकिन अब वो पल भी हमारे सामने है जब इन्हीं ग्रीन वॉरियर्स के साथ हम अब चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। और मैं चाहूंगी कि इन मंच पर तो आप हमारे साथ हैं, आप कुर्सियों पर भी हमारे को ज्वाइन करिए, क्योंकि राजस्थान, वाराणसी और चंडीगढ़ के ये रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा में रहते हैं, ट्री मैन कहलाए जाते हैं। किस तरीके का ये योगदान बातचीत की मैं शुरुआत करने वाली हूं। और छोटे से प्रयास किस तरीके से बड़े मुकाम तक हमें पहुंचाते हैं, उसी के तहत सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं। कानाराम जी, राजस्थान के आप रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान को जिस तरीके से प्लास्टिक फ्री बनाने का आपने संकल्प लिया है, क्या सोच है इसके पीछे, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? हेलो जी, ये मैंने शुरुआत की है मैं पहले एक बड़ी ग्रुप में एक वेटर था। वेटर के बाद मैंने एक चाय की दुकान शुरू की, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब दिलीप जी जैन हैं, वो मुंबई रहते, तो उन्होंने मुझे इस काम को लेके मोटिवेट किया कि हमारा ये जवाई क्षेत्र बहुत बड़ा है, जवाई डैम है, जहाँ पे बहुत बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पे लेपर्ड के नाम से बहुत फेमस एरिया है। तो इस जंगल को बचाने की मुहिम से हमने एक लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया कि आप ये इतने दूर से घूमने के लिए आए, इतनी अच्छी जगह है, नेचर को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आप इस जंगल के लिए कुछ कीजिए। उन्होंने मुझे सहयोग किया, तो उसी सहयोग के साथ मैंने एक प्लास्टिक की नई शुरुआत की, जिसमें मैं भी, मेरे घर से भी निकलने वाले प्लास्टिक से मैं खुद भी बहुत परेशान था। दुकान से निकलने वाला लोग आके थे, आधा फेंक देते थे, आधा जलाते थे, आधा नदी नालियों में जाता था, जो बीमारियों का रूप होता था, या कुछ जानवर खाते थे, तो वो जानवर का किसी को, अपने भारत में गायों को भी बहुत पूजन होती है, लेकिन मानना ये कि गाय खा रही है, लेकिन उसका दूध किसके पेट में जा रहा है वो नहीं पता, जा रहा तो अपने इंसान और मानव के शरीर में ही है। तो उसी की शुरुआत को लेके मैंने ये एक नई पहल की कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी घर से निकलने वाला होता है, उसको एक तरीके से लोगों से मैंने घर घर जाके बोला कि आप आपके घर का प्लास्टिक इकट्ठा कीजिए, मैं आपको कुछ सहयोग करता हूँ, मैं आपको कुछ प्लांट देता हूँ। लोग नहीं समझ रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट में देना नहीं शुरू किया। गांव के लोग हैं, उनको थोड़ा पर्यावरण और नेचर के बीच समझाना बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि इनको इनके बदले में कुछ देना शुरू करूँ। तो मैंने गांव की महिलाओं को, जब एक हमारी चौपाल होती है, वहाँ जाके गली मोहल्ले में जाके इकट्ठा किया और उनको समझाया कि आपके घर से जो भी आपका कचरा निकलता है प्लास्टिक, वो आपके घर को स्वच्छ सुंदर रख के आप बाहर फेंकते हो, आप बाहर मत फेंकिए, मुझे लाके दीजिए, आप 1 किलो लाके दीजिए और उसके बदले में आप 1 किलो चीनी लेके जाइए। तो ये चीनी वाला फॉर्मूला मेरा काम कर गया और इसी चीनी के फॉर्मूले के आधार पर मैंने ये एक नई मुहिम शुरू हो गई और लोग, गाँव की महिलाएं जो मुझे चीनी के रूप में जैसे प्लास्टिक घर से लाना देना शुरू किया, उसी के साथ मैंने अपने गांव के युवाओं को भी जोड़ा, गांव के लोगों को भी जोड़ा, जो प्लांटेशन में बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। जैसे कि आप भी 1 किलो प्लास्टिक लाइए और एक प्लांटेशन पाइए। और उसी के साथ नई शुरुआत की मैंने गांव के स्कूली बच्चों को, जो बच्चों को बोला कि आप आपके पेरेंट्स को, मदर फादर सबको बोले, आप कुछ भी यूज करते हो, चिप्स, कुरकुरा, नमकीन या जैसे भी कुछ भी प्लास्टिक की पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, वो आप बाहर नहीं फेंके, उसको आप मेरे पास लाके दीजिए, जिससे मैं आपको आपकी जरूरत का सामान दूंगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि किसी को अपने साथ मकसद में जोड़ सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट और इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है इन्होंने, वो वाकई बहुत सराहनीय है। अब मैं राजेश शुक्ला जी आपसे जानना चाहती हूँ, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आपके इस समर्पण की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि डिस्पोज ऑफ करना, डिस्कार्ड करना हम सबके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन वो कहाँ, किस स्तर तक जाकर किसको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों को नमस्कार करता हूँ। काशी जो माँ गंगा की नगरी है और 84 घाट हैं, माँ गंगा हमारी काशी नगरी में उत्तर वाहिनी स्वरूप में विराजमान है और सदियों से गंगा हम भारतवासियों को अपने आंचल तले पाल पोष रही हैं। और हमारी काशी में जो हमारी आध्यात्मिक शुरुआत होती है वो माँ गंगा के जल से ही होती है। और ये कहना और अतिशयोक्ति होगा कि हमारे धार्मिक पूरे भारतवर्ष हो या कहीं भी अब्रॉड हो, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आज जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे प्रसंग हम अपनी गंगा मैया के जल से संपादित करते हैं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि माँ गंगा की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गंगा मैया का यह कार्य पिछले 9 वर्षों से जब मैंने प्रारंभ किया, वाराणसी के गंगा किनारे ही हमारा निवास भी है, गंगा घाट के पास है। और हम देखते हैं कि गंगा मैया का जल जब हमारे इतने काम आता है, सारे काम, कोई धार्मिक प्रयोजन हो, तीर्थाटन हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, सब कार्यों में हमारी माँ गंगा का जल हमारे काम आता है। और उस गंगा मैया में भी लोग जाकर गंदगी भी करने में नहीं सकुचाते हैं। पॉलिथीन में भरकर अपने पुरानी जो पूजन सामग्रियां हैं, कई कई महीने हम घर में रखे रहते हैं, पॉलिथीन में भरते हैं, झोले में भरते हैं और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए गंगा में प्रवाहित करने में जरा सा भी सकुचाते नहीं हैं। इस मुहिम की शुरुआत करते हुए जब 9 वर्ष पूर्व हमने गंगा घाटों पर विचरण करते हुए देखा कि लोग गंगा में साबुन शैम्पू लगाकर स्नान भी कर रहे हैं, लोग अपना भी कपड़ा धो रहे हैं, अपने तन में भी साबुन लगा रहे हैं और अपने सैकड़ों लोगों के कपड़े लाकर भी धो रहे हैं गंगा किनारे। और वहीं बगल से 1 लोटा गंगा जल ले जाकर हम भोलेनाथ को भी, श्री काशी विश्वनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। और हमारी काशी नगरी में जितने भी विग्रह हैं सबका स्नान भी उसी गंगा जल से हम कराते हैं। कितना काम आता है हमारा ये गंगा जल। उस समय हमने एक संकल्प लिया, वाराणसी में एक अभियान चलाया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमने उनको 80 घाट पर स्वयं अपने हाथों से गंगा माँ के किनारे सफाई करते हुए और उनको डोलची में और डलिया में रखकर कूड़ेदान तक पहुंचाने हुए हमने देखा है। हमने सामने ये अनुभव किया कि जब देश के हमारे प्रधानमंत्री वह कार्य कर सकते हैं जो कि एक स्वच्छता का आंदोलन बने, उस दिन से यह संकल्प लिया और वाराणसी के 84 घाटों पर रोजाना प्रतिदिन कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब हम गंगा किनारे नहीं जाते हों। आज कभी नमो घाट जा रहे हैं, कभी 80 घाट जाते हैं, कभी राजघाट जाते हैं, कभी केदार घाट जाते हैं, कभी मणिकर्णिका घाट जाते हैं। ये सारे हमारी काशी के अभूतपूर्व अविस्मरणीय घाट हैं। इन घाटों पर जाकर गंगा की तलहटी की सफाई करना, अंदर गंगा के अंदर उतरना, गंगा के तल से पॉलिथीन, कपड़े, हमने देखा है कि साड़ियाँ, चुनरियाँ, कई प्रकार के कपड़े गंगा में विसर्जित करते हैं और दूर दूर से बह के आते हैं। उससे हमारी गंगा मैया का जो अंदर का जो जल है वो काफी गंदा मैला हो जाता है। उसको हमने इतना हमें तो लगता है कि 2-3 ट्रक हमने आज तक पूरा अगर शामिल किया जाए तो इतने कपड़े उसमें से हमने निकाल दिए अंदर से सफाई करते हुए। तो वो गंगा के अंदर से डुबकी मार करके अंदर से निकालना, और हमारे साथ एक ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर होता है, निकाल करके घाटों घाटों पर लोगों को समझाना कि भैया ऐसा क्यों करते हैं, ये कपड़े, ये पॉलिथीन में भरकर सामग्रियां। और हमने तो 1-1 फुट की शीशे की तस्वीर, ईश्वर की तस्वीर घर में खराब हो गई जी, भगवान की तस्वीर है पुरानी हो गई, लोग समूचा शीशा सहित हमारी इस माता की तरह हितकारी नदियों में समर्पित कर देते हैं। उस शीशा लगा हुआ तस्वीरों को निकाला। तो ये सारी चीजें निकाल करके लोगों को जागरूक किया
और हमारे साथ एक आरती का पात्र होता है हमारा अपना, हम गंगा आरती भी करते हैं सबके साथ। तो ये मुहिम चलाई, तो आज मुझे लगता है कि 9 वर्षों से गंदगी को दूर रखने के लिए आपने अपने संकल्प को जिस सरल शब्दों में बताया है, मुझे लगता है उसके लिए संयम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है और उसी के तहत आप समर्पित हैं, ये जानते हुए कि एक लक्ष्य के साथ आप इसे कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र हैं, इन्हें ट्री मैन कहा जाता है। ये अकेले मंच पर यहाँ जरूर हैं, लेकिन ये एक मजबूत पेड़ है और इनके साथ है 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम। ये छोटी बात नहीं है, 1.5 लाख पौधे ये अभी तक लगा चुके हैं, 500 से ज्यादा गांव तक ऐसा अभी तक ये मुकाम हासिल कर चुके हैं। गलत तो नहीं कह रही? अब ये सोच, उस सोच को अमल में लाने के लिए कैसे आपने ये कोशिश करी? आप मजबूत हैं, इसीलिए आज आपके साथ 10,000 लोगों की टीम है। पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद करता हूं, इतने बड़े मंच पर आके और इस तरह का पहली बार आने का अनुभव हुआ और थोड़ा हिचक भी होता है। लेकिन मैं एक खिलाड़ी था और देश के लिए यही होता है खिलाड़ी का, भाई नेशनल खेले, एशियाड खेले, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेले। मैं 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ और मेरे मन में ये हुआ भाई नौकरी तो लग गया, जो मन में एक भभक थी, हाँ तू कुछ कर सकता था गेम के माध्यम से, तो ये कुछ कर सकता है। तो मन में आया क्या करें, इस राष्ट्र के लिए भाई भाव था, क्या करें। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति के मन में भाव जरूरी है। तो वहां की हरियाली को देखा, पता करा ये पेड़ कैसे लगे, पता चला ये वहां के फ्रांस के एक ली कार्बुजियर थे जो नक्शा बनाया, और जब मैंने देखा प्लान से एक शहर हरा भरा हो सकता है, तो क्यों ना पूरे भारत के गांव भी हरे भरे हो सकते हैं। और मैं पेड़ लगाने मैंने शुरू किए, गांव गांव गया, युवाओं को जोड़ा। ऐसा लगता था शुरू शुरू में मैंने ये कार्य शुरू किया, लेकिन आज जो आनंद आता है उस कार्य को करने के लिए, अब युवा जुड़ते चले गए, गांव के लोग जुड़ते चले गए, और थोड़ा दबाव भी रहा रिश्तेदारों का, भाईचारे का, ये कार्य आपका नहीं है, ये माली का कार्य है, या इस तरह का, मतलब होता है समाज में ऐसा। लेकिन जब एक निश्चय है कुछ इस राष्ट्र के लिए, इस धरती माँ के लिए, कुछ मन में भाव है, समर्पित भाव है, निस्वार्थ भाव है, कोई कुछ भी कहे, बस आपने चलना है, आप में जो ऊर्जा है जो अंदर से मिलती है, तो चलते चलते बड़ा दबाव रहा, आप भी गाड़ी लो, आप भी प्लॉट लो, परिवार का भी, रिश्तेदारों का भी, लेकिन कुछ एक ऊर्जा आती है इस देश के लिए, इस भूमि के लिए करने की। गांव गांव गया, गांव गांव युवाओं को जोड़ा। देखो आज पंजाब में मुहिम चल रही है बेटा बचाओ, क्योंकि नशा इतने बड़े स्तर पर है। लेकिन जब मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूं जब हमने इस तरह युवाओं को जोड़ा, जो आज एक अच्छे नशे से दूर रहते हैं, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। और लगातार मैं जब गांव में गया, 80-80 साल की हमारी माताएं भी जुड़ी, 5-5 साल की हमारी बेटियां भी जुड़ी, जो हर साल पौधारोपण करती है। तो धीरे धीरे गांव गांव घूमा, युवा जुड़ते चले गए, और उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आई। हाँ। पूरे विश्व में, जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। हाँ, प्रकृति भी कोई चीज है, मनुष्य भी इसका कोई हिस्सा है, नहीं तो मनुष्य भूल गया था हम प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जब उसने देखा भाई आसमान साफ है और अलग अलग तरह के पक्षी भी दोबारा आ गए हैं, लुप्त होती प्रजातियां आ गई हैं, तो उसके बाद मन में आया कुछ ऐसा किया जाए। उत्तर भारत में, मैं हरियाणा में बोलता हूं, बनी होती थी, फॉरेस्ट लैंड होती थी हर गांव में। गांव उसी को बोला जाता है जिसमें गांव वासियों के साथ वहां के तालाब हों, वहां के जो मुख्य जीव जंतु हों, एक फॉरेस्ट लैंड हो, उसी को मिला के गांव बोला जाता है। ये नहीं गांव में व्यक्ति रहते हैं, सभी पशुधन जीव जंतु सभी पक्षियों को मिला के गांव बनता है। ऐसा
वातावरण, तभी उसका नाम गांव दिया गया बहुत है। अच्छी बात आपने कही है। कोरोना के बाद के हालात ही एक सबसे बड़ी वजह रही कि आप इसे ऑक्सीजन बाग कहते हैं। शुरुआत आपने करी, सहयोग आपको मिला, ऐसे में आर्थिक मदद। देखो, जैसे मन में जब भाव कुछ करने का हो, शुरू में मैंने बताया जैसे भाई दबाव रहा, अकाप पैसा। राजीव जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। सहयोग शुरुआत समझ आती है, लेकिन उसमें आर्थिक मदद भी तो जरूरत होती है उसे अमल में लाने के लिए। एक्चुअली आर्थिक रूप से तो जब आपको संसाधन मिलते हैं तो जरूर आपके साथ जब लोग जुड़ते हैं तो जरूर आर्थिक तो मदद मिलनी चाहिए भी। लेकिन आज तक पिछले 9 वर्षों में हम तो अपने स्वयं के तन मन धन से ये कार्य करते आ रहे हैं। जी, आपने क्या ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहां आपको लगा कि लोग तो जुड़ रहे हैं लेकिन और आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मदद की भी जरूरत है? जी, आर्थिक मदद की मुझे ज़रूरत बहुत लगी। दिलीप जी ने तो मुझे सहयोग किया, लेकिन वापस जो गांव के हमारे बड़े बड़े भामाशाह है, तो उनको मैंने मोटिवेट किया कि आपके घर में आज आपका जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन है, आज आप ही उसी जन्मदिन के जो भी खर्चा होता है उसी के लिए आप अपने बच्चों के लिए या गाँव के बच्चों के लिए प्लास्टिक की मुहिम चल रही है, उसमें भी आप कुछ सहयोग कीजिए। तो बड़े बड़े भामा को सहयोग से आज उनकी तरफ से कुछ बुक हो गए, कुछ पेंसिल हो गए, कुछ प्लांटेशन हो गए, चीनी हो गई, तो उन सब के सहयोग से मैंने ये मुहिम को और आगे बढ़ाना शुरू किया, पीछे नहीं हटा। और आज हर महीने से ज़्यादा 500 किलो भी प्लास्टिक आता है और बहुत ही अच्छी नई एक पहल शुरू हो गई है। गांव वाले भी बोलते हैं कि आज हमारे गांव में एक स्वच्छ और सुंदर और जंगल को बचाने की नई मुहिम चल रही है। इन तीनों को सुनने के बाद ये कहना बिल्कुल सही होगा, छोटे प्रयास पर बड़े काम। बहुत अच्छा लगा। जी बताइए। जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैंने एमकॉम के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया और एक प्राइवेट कंपनी में, तो अपनी एक सैलरी का छोटा सा हिस्सा इस पर्यावरण संरक्षण के लिए पर मंथ ये जो खर्चे आते हैं, आरती करता हूँ रोज, तो उसमें कपूर है, अगरबत्ती है, जो भी बत्ती है या जो डलिया है हमको उठाने के लिए चाहिए, ये सारी चीजें वो अपने पास से ही हम अपनी सैलरी में से एक हिस्सा उसमें खर्च करते हैं। और उसमें बड़ा हमें लगता है इन लोगों को भी बड़ा एक सुकून मिलता है कि हम अपने भारत राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और हमसे जुड़कर लोग जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाने और उससे जुड़ने की इस कोशिश के तहत आप तीनों ने जो प्रयास किया है उसमें जिस तरीके से आप सफल हो रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ यहाँ इस मंच पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। राउंड ऑफ अप्लॉज। धन्यवाद। चलिए, आजादी के अमृत महोत्सव में जिस तरीके से हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है, उसमें इन ग्रीन वॉरियर्स को सुनते हुए भी एक अच्छी सीख हमें मिली है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक पहचान को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिस तरीके से ये प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें आजादी का अमृत महोत्सव ही एक खास पल है जब आप और हम इसके जरिए जुड़ते हुए इन्हीं उपलब्धियों के बारे में जानते हैं और सीख लेने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि 15 अगस्त जिस तरीके से नजदीक है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आजादी का ये अमृत महोत्सव है, उसका उद्देश्य जिन अलग अलग अभियानों के तहत यहाँ पर चल रहा है, आज यही एक खास मौका है जब इस इनिशिएटिव के जरिए मैं ये कह सकती हूँ, माई इंडिया माई लाइफ गोल्स कॉन्क्लेव के जरिए हमें एक बड़ी सीख मिल रही है। क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमें इनकरेज कर रहा है अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए। एंड टू go ahead further with this, I would like to add on, the initiative encourages a lifestyle that focuses on mindful and deliberate utilization of resources and aim to change the present use and dispose of consumption habits. चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत ने हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस देकर दुनिया को इंस्पायर तो जरूर किया है। सस्टेनेबिलिटी का पार्ट तो हमने पुराणों से ही सीखा है और ये तो हमेशा से हमारे ट्रेडिशन या कल्चर का ही हिस्सा रहे हैं। आज हम सोलर और विंड एनर्जी में ग्लोबल लीडर के तौर पर भी उभर रहे हैं। हालांकि कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि साल 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी ग्लासगो में हुए COP26 कॉन्फ्रेंस के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2070 तक
नेट जीरो एमिशन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। और इसी कड़ी में इंडियन रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी रखा है। और इसी के साथ हमने सबसे पहले एलईडी बल्ब्स को बढ़ावा देने का अभियान चलाया है। हालांकि इससे भी सालाना 4 करोड़ टन एमिशन लगातार कम जरूर हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से डिकार्बनाइजेशन और अर्थ को सस्टेनेबल प्लैनेट बनाने के लिए भारत जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत सरकार ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भी की है। अभी भी हमारे लक्ष्य हैं और ये लक्ष्य थोड़े दूर जरूर है, लेकिन आज अपनी इसी ज्यादातर ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए थर्मल पावर पर भी हम निर्भर हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में ऊर्जा जरूरत लगातार बढ़ जरूर रही है, लेकिन सिर्फ ग्रीन एनर्जी से इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस बड़े निवेश का मुद्दा भी बहुत अहम हो जाता है। एक और कई ऐसी जरूरी बातें हैं जिसको समझना हमारे लिए आज के वक्त में बहुत जरूरी है, और उसी के तहत अगले पैनल डिस्कशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां इंडिया सेटिंग द ग्लोबल ग्रीन एजेंडा में इस पैनल को मॉडरेट करने वाले हैं। और उसी के लिए मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा को। Over to you, Karthikeya. Thank you so much, Surbi. Thank you. I take this opportunity not only to talk about how India is doing in terms of meeting climate change agenda, setting the order for a global green world. But I think we live in a world which is at precipice, and I don't want to make people sweat because it's already humid outside. But the fact of the matter is that if you look at the newspapers, you'll understand that climate change is a reality. It's not something which you used to watch in films 5 years ago. It's not something which would happen in the next 50 years. It's not something which will not touch our lives. It is something which will impact both rich and poor equally. And for this, the initiative taken by our Prime Minister Narendra Modi is important. Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has set a target, 2070, zero carbon emission, non-fossil fuel energy to 500 gigawatt. Now, the question is, can that be delivered? Can those statistics turn into reality? Can we increase renewables in our system, connect our discoms with solar and wind? We have done well. It's not as if we have not done well. You'd be surprised to know, and if my memory serves me right, 16% of our energy requirement is also drawn from solar, and I think 11 from the wind. So we are doing well. Unlike the French, which draw 50% of the power consumption from the nuclear energy, India is making great strides under Prime Minister Modi's vision today. So on this August occasion and our My India, My Life goals, I'm very happy to invite two distinguished personalities on stage. One, a pioneer in fashion, doesn't need an introduction. Ritu Beriji, please, I invite you to come on the stage. Who has worked on sustainability, khadi, ethnic wear, and Rashmi sir. He has a long introduction, but I think it's important for you to know that he has served in various capacities. He is a distinguished fellow and program director, Earth Sciences and Climate Change, TERI, former chairman, UPSC, and former secretary, MNRE. He has worn many hats. So, sir, my first question to you is, you can take the mic. You can also check whether, okay. My first question to you is, there is an agenda we have. There's a climate change which is facing us. It's going to change the lives of the poor people. But there are technological interventions, there are targets, there are disruptive technologies we have in our front of us, like lithium, hydrogen, solar, wind. So first thing is, how are we setting the global agenda in G20 and by Prime Minister shepherding the global South?
Thank you very much. You said that climate change is upon us, so it's a huge global problem. But there are two aspects of this problem. One is the source of climate change, the reason why climate change is happening. That's, all of us know, it lies in the way we use energy, primarily the fossil fuels. And the second is the impacts of climate change, how it affects us. You know, and it's not the rich people who get affected by climate change much. It is the poor people, people who live on the margins of the society, who are vulnerable to climate change. You know, there are natural threats of all kinds: floods, extreme weather events, huge precipitation, prolonged droughts, things like that. But it is the people whose means of living is low. They are the ones who get affected by this. India is a country which has been affected by climate for thousands of years, and it is known as not climate change, it's known as climate variability. You know, the variation in the climate, you can see we have long summers, we have long winters, we have long rainy season. It is not a usual weather which developed countries have. People in the US, people in Europe are not used to this kind of weather, variability in the weather. So their climate has always remained stable generally. So for them, climate change is a huge new monster. So that is why they talk so much about climate change. But in our country, we have always been exposed to high degree of climate variability. But what is now going to worry us is that these impacts which we face today are going to get accentuated more and more. So that is what the G20 is now going to take up this issue in two fashions. Which are with the vision of the Prime Minister. He has said life, you know, lifestyle for environment. We need to change our lifestyle. If we don't change, we will not be able to modify the way we use energy. And energy drives everything, you know, in all our lives. Energy is the primary driver of higher standard of living all across the world. So the way we use our energy has to change. And that is what one of the primary agendas of G20. We have to make a transition from fossil fuel based energy system to renewable energy based system. And the second is to build the capacity of countries or the vulnerable communities to withstand this impacts of the climate change. Isn't it so unfair if we look at our per household energy consumption? I think it's 1/10 of an American household. And in context of individual expenditure of carbon, I think we are the lowest, and the burden comes on global south, countries like us. And if you look at the West, they have made the best of the technologies, but they do not want to take the responsibility of it. That's very true. In fact, if you look at the statistics, and only carbon is not the only natural resource that we consume. Carbon is one of the natural resources that we consume, but we consume water, we consume air, we consume land, everything. The entire ecosystem gets affected by the way we live. So, but carbon becomes prominent because carbon causes climate change. So, so what is happening is that our average consumption of carbon is one of the amongst the lowest in the world. It's just about 1.6 per tons of CO2 in our country. Whereas every average American emits almost 16 tons per capita, 16 tons. So they're almost 8 or 10 times more energy that they consume, and energy from fossil fuels. So Europeans consume almost 10 tons per capita, whereas we use much less than even 2. 2 is also not the limit which we have not reached. So there is a huge prospect for scope for growth in our country. We are a growing economy, so we are bound to grow. Our consumption of energy will grow because we have not reached the standard of living which an average American or average European enjoys. So India is bound to grow. But India is going to play a very important role in shaping the new discourse on climate change globally. Because India is a rising economy. India is going to be the third largest economy in the world. It is the third largest emitter today in terms of current emissions. Forget about the historical contribution which the Europeans and Americans have. But it's a growing economy, and it's the third largest emitter today. So it has a very huge role to play in that kind of transition that we are going to make from coal, from oil to renewable energy.
And that's the vision which Prime Minister has laid out. So we have to play a very important role. But unfortunately, as you said, the developed countries or the major economies of the world have not done as much as they should. In fact, they have not brought down their emissions despite the fact that they were asked to bring down. I think the war in Ukraine clearly shows that their appetite for neither gas or oil has come down. Absolutely. They have circumvented entire process. Rituji, tell me one thing. You know, when we talk about fashion, the entire imagination is limited to the show. But then fashion is also about clothes. It's about sustainability. हिंदी में जैसे कहते हैं, इसमें कुटीर उद्योग भी आता है. Cottage industries also come. How can clothes, sustainability, and greenness in context of manufacturing can be enmeshed? Is it possible? I think the whole world today is talking about green fashion. The whole world today is talking about sustainable fashion. The reason for that is, like Mr. Rashmiji said, that there is a lot of impact on the environment. There is a lot of kids today. I mean, I have a 15-year-old kid who comes home from school, and she is taught in school that you have to be very careful. It's your future in times to come. There's going to be no water. There's going to be, you know, winters are going to be summers, and summers are going to, in simple language. And I think that is something that is the future for us, to have our kids understand the impact, because they are not going to understand all these, you know, big words. They just need to understand that the world for you has to be a better place. And for that, you have to be as green, as careful, as vigilant as you can be. Coming back to what you said about fashion, I think we have to be very careful. We have to be very vigilant about what we buy, from the fabric to the garment. And what we produce. And of course what we produce, because everything is not about, you know, commercial, everyone is commerce driven. So it's a very, May I add the third thing, ma'am? Sorry? What can be repurposed? Circular economy, which Prime Minister spoke about. I agree. I think Mr. Modi has done an incredible job of creating awareness for the world, for at least for our country. And I do believe that we are blessed with a fabric like khadi. And, you know, khadi is a real symbol of sustainable fashion. It's a real symbol of a green fabric. There is zero carbon footprint. Khadi is, we used to call it the air-conditioned fabric, because you can wear it in the summer and in the winter. It's much, you know, we always believed it was a fabric for politicians. It was for senior citizens or for older people. But today we have a lot of young people wearing khadi, because they realize that there's so much variety. It's not very expensive. Of course, you can get a very expensive range of khadi, but it is a true symbol of India, a true symbol of Make in India, and a true symbol of green India and a green fabric. So there are many options in this world. We just have to be careful, you know. And I mean, it's very, very easy to put the blame on others and say they should do it first. I think each one of us needs to take that responsibility to create the movement. So as a designer, I believe that in my organization, I put a stop to plastic, for instance. I put a stop to anything that is not reusable, something that is not organic. For instance, khadi is very, very organic. And what do you think that khadi needs to do, or khadi should be doing to even more broad base itself, you know? There's another session, but, you know, because you spoke about khadi, you know, it's like a health food. It becomes a fad. It doesn't become your lifestyle, you know? You slip back into your old habits. What is required to broad-based this sort of a consumption? Yeah, but you know, to popularize khadi. Like you said, it's health-based and not a lifestyle. If you don't make living healthy your lifestyle, it is useless to do these binge diets and binge short-term things. So if we really want to create a change, and if each one of us takes it upon ourselves, that the world will change because of me. Because I really do believe each person creates that difference, makes that difference, and creates that opportunity. So if each one of us take it upon ourselves that
I'm responsible to change this world, I think there will be a change. I think there will be a difference that we will see. For instance, in my kids' school, everyone's carpooling. You know, and at one time, each kid used to go in one car, maybe from the same destination. Now, that's a big change. Okay. Rashmi, you know, I was going through some data, and I found that the cost of the solar power in last 50, 60 years has gone down by 84%. And the cost of wind down by 49%. So why don't we see that solar wind revolution? If the cost is coming down, why aren't we witnessing a revolution? It should have been a revolutionary change. That's an interesting point. Thank you very much. What has happened is that we are a coal-consuming country. I mean, even the US is consuming more coal than we do at the moment. But we are changing. You know, in the last 15 years, what has happened is that the price of solar power has come down compared to coal-fired power. We have large number of coal-fired plants, but we also have solar power plants now. We have wind power. You are right. Even the coal consumption is up by 16% in the last... Yes, but coal is around 4 rupees per unit today. But solar power is around 2.5 today. So it's lower than, but it is a variable cost. You know, the cost of, you know, the power when the sun is shining, but when during the night there is no sun. So you can't produce solar power in the night. Similarly, wind power, when the wind blows, you have wind power. So the variable cost of solar and wind power is lower than coal today, but it is not enough for us. Because we need power during the night, when we have the maximum peak demand of power. So we need to store energy. And that storage system is not available to us today, along with solar and wind. So if you include the cost of storage on the cost of transmission and the cost of banking the power, then the total cost goes higher than coal. So coal is still a very reliable source of supply for us, just as nuclear is. So nuclear fire, the hydroelectric plants, nuclear fired plants and the coal-fired plants, they are still the largest source of power because they are producing power 24 hours of the day. And they can raise the demand, according to the demand, they can raise the production as and when you reach. But it cannot happen in solar and wind. So what we need is a new technological innovation along with solar and wind to store the energy which we produce during the day. So is this the reason why that the integration of the DISCOM with the non-renewables is not taking place, which the people have been writing papers on? That's one reason why the DISCOMs are slightly averse to using a renewable energy, because they have long-term purchasing power agreements with the state governments, with the consumers. You know, they are accessing power 24 hours of the day. So coal plants are still able to supply them power at a lower cost. But if they use only renewable energy, they can source the energy, but they cannot supply it when the peak demand goes up. So that time they still have to resort to coal. So they are slightly reluctant to depend entirely on renewable energy. So we need a technological innovation, number one, and we also need a slight change in the energy policy, because energy pricing, because most of the DISCOMs are constrained to supply power to the consumers in agriculture sector, industries at fixed prices, which are controlled by the state governments. Unless they have flexibility in fixing the prices according to demand and supply, they will find it difficult to rely only on renewable power. So we need a lot of change there. So then what remains India's biggest challenge in context of, we have set up priorities, we have very high and ambitious targets. How do we reach them? Because the global supply chains have become complex. The wars on one cold war and another hot war like Ukraine and Taiwan has complicated Indian sector. And the reason why I'm asking you is, if we want to, for example, work the lithium way, then we are dependent on a country. And then repurposing the lithium is another challenge in itself, because once the battery is done, what you do, even that can create a lot of pollution in the soil. So what remains our biggest challenge in terms of achieving those goals, ambitious goals? Our goal, in fact, is ambitious, but I must tell you, give you a pleasant news, that our goal is to reach 50% of energy production capacity from renewable sources by 2030. Correct. That's one of the goals which Prime Minister has set for us.
and that includes 500 gigawatts of renewable energy capacity, not in terms of generation capacity. And we have already reached against 50%, 42%. So you can see the 2030 is 8 years away, and in 2022, 23 as we talk, we have created a capacity of 42% of the total electricity generation capacity in the country is from renewable sources. Solar, wind, nuclear, hydro, all put together. But 42% capacity. Capacity is not what you consume. What you consume is generation. So in terms of generation, we are still at 20%. So from 20%, if we really want to change the entire energy system on renewables, we still have a long way to go. But we are making good progress. In the last 15 years, the progress has been remarkable. I mean, you won't believe the capacity of solar power was just about 10 gigawatts in 2008 or 9, if I remember correctly. 10 gigawatts. 10 gigawatts. Which is 10,000 megawatts. Okay. Can you believe how much it is today? It is, at the moment, it is 170 gigawatts. 170,000 megawatts just in the last 15 years. So it's a huge, tremendous progress. How was it achieved that, sir? You must have watched it closely. What were the basic things which were done? Investments, number one, and target set by the government that the renewable energy producers should set up. And they were given contracts, long power purchase agreements. So that is what started incentivizing the investments in renewable energy. And as you say, see, the technology costs have started coming down. See, investor basically looks for return or profit. Correct. And if the cost starts going down, they will invest. And that is what is happening. The cost of solar power technology has started coming down in the last 10 years because of scale, because of the high targets. And they get assured returns. So they have invested more, and we have been able to create that capacity. You know, you were talking about children, Rituji. You know, if you look at the business czars, they are also globally committed to the global green goals, but then they fly their planes. And in terms of carbon emission, their personal lifestyles don't reflect that. Do you think that celebrities and other people, in order to participate in the ambitious target which the Prime Minister has set, should also do an amendment to the lifestyle? Because it ultimately boils down to an individual. 4 people can travel in a car, 60 people can travel in a bus, mass transit program. You know, ultimately your individual acts make a lot of difference. That's exactly what I said, that if each one of us take responsibility and feel responsible that we will make the change, there will be a change. For instance, I remember that... Tell me, what do you do? How are you for one, a green conscious person? Like, for instance, the carpooling is one thing. I try to reduce the use of our vehicles to the maximum. We try to, you know, in the morning make a schedule. I'm talking about home stuff. We try to make a schedule so that there's 1 trip instead of 6 trips. You know, that's one thing. When we go shopping, I mean, for my whole family, I try to make sure that everybody avoids shopping too much, and they try to use and recycle what they already have, which is a big thing, because... Does that make you a popular person in your family? I don't know if I'm popular or not, but they understand that it's for a good... I guess I save them a lot of money, so I help them recycle what they're wearing. I mean, the same sari can look very different if you rework it, instead of going and shopping and buying something new. Also, I started a trend in our setup. You know, tote bags are very popular, canvas tote bags. Everyone used to go shopping and buy pick up a shopping bag. And a lot of India and globally. Now, when you go abroad, they charge you for every bag you buy. You know, it's a 0.25 cents or whatever. So I've told everybody, each one has been given a tote bag that you carry, and you don't use plastic, you don't use so many shopping bags. You have a tote that you chuck all your shopping into. I mean, these small things make a big difference, you know. We have 1.4 billion people, am I right?
1.4 billion, or have we increased already? 1.2. Because every time I think of the statistics, we've increased. So I think if we make that difference, we are a real trendsetter. We can show the world, and under the guidance of Honorable Prime Minister, we are setting trends, because everywhere in the world that I go, they say, my God, your Prime Minister is a real star. The way he handled COVID, the way he does everything. You guys have the most popular economy, the most growing economy. So I think as people under a guidance of that and leadership of that kind, I think we can make all the difference. You know, in terms of making the difference. Also, sorry, one more thing. Even beauty products now, when I talk about cosmetics, they are also very, very aware of organic and green products. You have an organic boom. You know? You have shops all around which says organic. Yeah, but for a good reason, you see. And we can say that it's all blah blah and it's all talk right now, but it's the blah blah that converts into real living. You know, you have to start talking about it. You have to start telling people. When I became an advisor for KVIC in 2016, if I've been a, that's khadi. That's khadi. The people did not use khadi. I never heard about khadi. And then when we started working and we started talking about how trendy it is, how beautiful it is, every designer was doing khadi. You were using khadi for bridal outfits. I've done a bride in khadi. For Diwali, people were wearing khadi. So that was a change. It starts with one person and then it escalates. So I think each one of us plays a huge role. Rashmi ji, you know, this word I used in context of fashion, but in context of our expanding economy. Prime Minister yesterday in his speech said he expects another no confidence vote in 2028 and will be a 3 trillion economy. It was part of a report in the Lok Sabha. But the point is that we are looking at a place where we are number 3 in the world economic order. In that context, what sort of disruption we need to bring about in your experience so that renewables get integrated into the non-renewables properly, synergized? Because we cannot say that fossil fuel will not be there. You know, I think then someone is really living in a fool's paradise. They will have a role to play. But how do we increase the integration of the non-renewables and renewables? Yeah. And as we discussed, it is happening. The transition or movement away from a fossil fuel based economy to a renewable energy based economy is happening now. As I said, in terms of capacity, electricity generation capacity, it's 42% that we can generate from solar, wind, nuclear and hydro. But the challenge is to feed it into the grid and make it available to the consumer 24 hours of the day. 24 hours, day and night. So that challenge involves producing energy in a manner which is green, completely green. And so and where is this energy consumed? So that is what is the real challenge, because energy is consumed in different kinds of economic sectors. You know, we use it in our homes for lighting and cooling. The industry uses it to produce cement, steel, textiles, a lot of things, plastics, everything. Pharmaceuticals, chemicals, and these are all highly heat-intensive industries. They are extremely high users of coal and fossil fuels. We have transport industry. The transport, we have vehicles, automobiles, buses, trucks, they all ply on oil. So we need to change that. Agriculture uses high degree of fertilizers. Correct. Fertilizers are extremely carbon intensive. That's why Prime Minister is focusing on the millet campaign. Yeah. So agriculture, transport, industry, residential and commercial buildings, you name it, we use energy in different forms and different manner. So we need to change the way we produce energy and we consume energy. So how can we change? You look at, so there are two things you're talking about: produce energy and consume energy. So consumption of energy involves lifestyle change, like Rituji is saying. The way you use textile, the textile industry, the textile products, that involves a lifestyle change. You need to recycle it, reuse it, repurpose it, not waste it, reduce the waste, so that you minimize the fresh energy. Like energy-friendly buildings, where, you know, the maximum part of the time you get sun, so you don't end up consuming electricity. That's right. That's right. So similarly, in transport, we can use
electric vehicles, fuel cell vehicles. We can use more mass transport. In industries, that is the real challenge, because industries produce almost 30% of our total emissions. And they are not easy, it's not easy to change. A steel production, for example, it needs coal. Today it needs coal, and unless we use green hydrogen or gas, we cannot replace coal. Because renewable energy from solar and wind cannot replace coal in steel industry. That's the scientific fact. So we need to change that. Can I ask you something? Because, I thought, I'll ask this question separately. Do you think blending in green hydrogen is the way forward? It is, certainly, as I said. And is it sustainable in long run? In the long term. Like the way Americans shifted to shaling for some time, 5 years ago? Oh, they use gas. Shale is gas, not green. Shale is certainly not green. It is natural gas, and it is a fossil fuel. So it is not green. But it is greener than coal. Correct. It's greener than coal, yes. Less carbon intensive. Yes. But the problem is, yes, if you can shift from coal to gas, you can reduce the emissions, but it is still expensive, more expensive than coal. So you can't afford to increase the prices of the steel and cement and all the products that you use in the economy. You cannot increase the... So when you reduce the emissions by changing the way you produce energy, you are also increasing the prices of the electricity, prices of all the products that you use in the economy. We have to be prepared for that. Is our economy prepared to do that at this level of development? That is the kind of balance which we have to achieve. But in the long term, certainly there is no doubt that in India, a country like India, which has very low resources in terms of energy, we have nothing else except coal. India doesn't produce oil. India doesn't produce gas. India doesn't produce nuclear energy. We don't have uranium supplies. So we don't have access to all the supplies that the other developed countries have. We have a severe problem to contend with here. So, but in the long term, we have to prepare a sectoral transition strategy as the way we produce energy, green hydrogen. And it's still costlier than coal by 3 times at the moment. But it is hoped that if we start producing on a scale, higher scale, then the cost starts coming down, just as solar energy costs have come down. In the next 15 years, it will hopefully. So what is the question was, what do we do in the long term? Yes. In the long term, we prepare a growth strategy where we look at each sector differently. Transport, energy, agriculture, residential and commercial buildings. Each sector has its own requirement in terms of energy. We produce that energy in renewable or green form. And secondly, most importantly, we change the lifestyle. The way we use the products. We use the timber, plastics, steel, textiles. We need to reuse, recycle without wasting the natural resources. Then we will be able to contain this severe problem of climate change. And I think at the end of the session, I would also say that the climate change has, as you very rightly pointed out, has changed a lot of things for us. For example, there's a word in Hindi which everyone would know is associated with monsoon, puhar. But if you look at the rain pattern, it's like a deluge. The sort of rain which Delhi has witnessed in 2 years, it's like someone has opened a water tumbler from upstairs. This is very unlikely of a monsoon, which would have been a very gradual drench. And secondly, the patterns have changed. The western part has become wetter. The eastern India is becoming slightly drier. So I think what we also require, which we call is disrupting technologies, disruptors, so that we can make best of, unfortunately, what we have created, because now the capping is supposed to be at 1.5 degrees Celsius, and this is the reality. So in this context, the whole goal setting in context of a green India and India setting the lead for the world for lower carbon consumption is very, very important. And on this note, I thank both of you for participating in this special edition of our program, My India, My Life, My Goals. Thank you, all of you. Thank you so much, Karthikeya. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It was great hearing you out.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Kartikeya. It was great hearing you out. And I think इस session के बाद क्या हम ये कह सकते हैं, Kartikeya? We should reuse the past, recycle the present, and save the future. Done. Thank you so much. So the many more interesting facts that you are going to witness today at this conclave, and many more special initiatives that we've been talking about. And because it is my India, my life goal, so I'm sure when we talk about lifestyle for environment, there are a lot of changes that we need to adapt, and there are a lot of things that if you wish to ask from our panelists, you are open to. Do let me know if you wish to speak to them, if you want to know something, what are the changes and the habits that we need to adapt in our lifestyle. Of course, that's why I said recycle the present, save the future, reuse the past, because we have a lot of expertise here, a lot of people who have been working on these efforts and initiatives. So I think it's a great opportunity for all of us to talk and discuss. Anyways, okay, let me introduce to the special guest that we have. And from TV9 Network, we have our Chief Revenue Officer, Mr. Amit Tripathi. Thank you for joining us, Amitji. And Editor Convergence, Deep Upadhyay. We have along with us Deep sir, I can't see you. Where are you? There you are, the man behind everything. We would like you to join us on the stage as well. And Group Editor Digital, Panani Anand sir. Panani sir, your presence is much needed. Much needed. The only man in the great traditional attire that you see here with the great personality is going to be in the hall soon, because I've been calling him and standing along with him behind. And I think Panani sir is going to join us soon now. Anyways, let me introduce to the special guest from Ministry of Culture. We have the Joint Secretary, Srimati Uma Nanduri ma'am with us. Thank you for joining us today, ma'am. And from Ministry of Culture as Joint Secretary, we have Srimati Amrita Sarbhai with us. Thank you so much for joining us today, ma'am. And let me tell you, we have Mr. Harish Gangwar with us, who's the Director of Finance from Ministry of Culture, as well as Mr. Rajiv Kumar, the Director from Ministry of Culture, and Priyanka Chandra, the Director from Ministry of Culture. I would request all of you to please join us on stage. Round of applause, please. I request if anybody could please call Panani sir also to join us. Deep sir. Thank you so much. It's a pleasure having you with us, ma'am. So I have Srimati Amita Sarbhai with us today, who's a Joint Secretary from Ministry of Culture. Well, a great capture. We are also going to felicitate the warriors who are with us today, and please welcome them. Can we have someone to please get the bouquets? Yeah. Sir, Deep sir. Please, I would request you to please welcome them, hand over the bouquet to them. Thank you for your precious time. Your presence means a lot on this platform. A great initiative. So we have on stage with us Srimati Uma Nanduri ma'am, who's the Joint Secretary from Ministry of Culture. And ma'am, thank you for your precious time. As I said, it's a pleasure having you with us on stage today. Thank you. Thank you. Ma'am, I request you to please be on stage with us. So because we have Srimati Uma Nanduri with us, ma'am, can you please give her a mic, please? Hand over a mic to ma'am. Ma'am, there's one thing that we wish to understand by all these initiatives that the government is taking. A lot of youngsters are also getting involved and understanding and witnessing the fact about the changes that we are observing in our day-to-day life because of the climate. How do you actually think to execute all these initiatives, and what kind of response have you got? Yeah, thank you so much.
Yeah, you're right. Under the honorable leadership of our honorable Prime Minister, Azadi Ka Amrit Mahotsav has started from March 2021, and from then onwards our journey has grown by leaps and bounds. We have just graduated from whole of a government approach to the whole of a people approach, and we are working on 9 themes, and life is one among them. In other themes like water conservation, culture pride, and many more themes, we are working on it. And this is not Ministry of Culture's activity alone. It is all the department, all the people in the country, we are working together. And as you said, and Madam Ritu Madam also told in this thing, the life goals for propagating and promoting the life goals. We are very happy to partner with TV9. Big round of applause to TV9 for the great initiatives that they have taken. And they have identified the warriors, green warriors across the country. Let us give a big round of applause to the warriors who have worked relentlessly for the country. And they have set an example. And TV9 has also worked in about more than 50 institutions, the plantation programs they have done. And they have also done kind of webinars involving the youth. And these are the great initiatives. In addition, I also feel strongly any activity should start from home. So until unless we teach our children, almost all of us are mothers and fathers, except few people over here. So we should teach our children what is this, in what way we can preserve our environment. Till then, if you expect change, any change should happen at the home itself. The home is the biggest pathshala for the children. So this one has to understand. And regarding the activities that are being done for the life goals through the Culture Ministry, I request my colleague Amita Sarabhai, she will explain in more detail. Please join us on stage, ma'am. Amita Sarabhai, the Joint Secretary from Ministry of Culture. Thank you, Uma. Thank you for inviting me to this forum. So the biggest question, you know, when we talk about environment and if culture is said in the same breath, the question which arises in everybody's mind is, what has culture to do with environment? But the truth cannot be far, you know, from what I'm just going to explain to you, that culture, especially in its intangible form, which is explained as what is our own lifestyle every day, is something which is totally environment friendly. Our country has stood for environment friendly, intangible culture through our folk and tribal art forms. And the Ministry of Culture, through its various institutions, you would be surprised to know that the Anthropological Survey of India actually falls under the Ministry of Culture. So Anthropological Survey of India, and we have a lot of zonal culture centers, 7 of them, which are working all across the country, through which, you know, we are doing a lot of activities, especially to sustain and preserve all the vanishing art forms of which are, you know, basically environment friendly. And especially the tribal community has been the preserver and conserver of environment friendly traditions. So in the last, since 2019, since this, you know, vanishing art form preservation became a part of our vision document, around 357 activities have been done by the Ministry of Culture in the field of sustaining these environment-friendly practices. And especially, you know, with the lifestyle changes, with the modernization, people opting for modern methods and techniques, these traditions are the ones which have been really hit. And what we find is that people, you know, now it has become a fad to learn all these environment-friendly painting techniques, wood carving techniques, and then adapt them through machine form. So from this forum, I would like to implore everybody, please buy traditional handicrafts and traditional items. Please preserve the vanishing arts by giving patronage to these artisans and artists, because they are the ones who are actually, you know, sustaining environment-friendly traditions. Machine-made items would be much cheaper
but they are not going to actually sustain this goal for us. So that is one thing. Other thing is Anthropological Survey of India. We've got some very beautiful museums. So I would implore you to, whenever you go to various parts of the country, and you do come to know that there is an anthropological museum there, please go and visit them. And you would be really surprised to know as to how much, environment-friendly techniques are being adopted by the tribes. And especially when you visit Port Blair, if you go to the Anthropological Survey of India office, you would come across some traditional huts which have been made by one of the most remotest tribals, who hardly get in contact with the general population, that is the Senetalese tribes, and the Nicobaris. Similarly, in Santhal area, or in south also, you would find all these traditional huts which have been made by the traditional people, by the tribals themselves, using traditional items. So these are some of the few activities, especially Hadupathy. Everybody knows about Ayurveda, but there is a traditional medicine system called Hadupathy in Jharkhand, which is being preserved by the Culture Ministry. So these are some of the few activities which I thought I would use this forum to just apprise everybody that Ministry of Culture is not only about dance and music, but there are a lot of environment. It is also about sustaining environment. Thank you. Well, thank you. It was great hearing you, ma'am. But I have a question. Being an anchor, how can I miss this opportunity? Before you ask the question, I just want to appeal to all these people who are here. And few days back, our Honorable Prime Minister has stated very clearly that this year also we are going to celebrate Har Ghar Tiranga. Okay? It's an appeal and a request to all of you. And you will do it at your home. But you have to promote for others also. And this is not for because Prime Minister has said or somebody else has said, but it is because we have to tell our children what our country is. Some activities, until unless we do, the children will not pick up this. Okay? So today morning we had a beautiful rally starting from Pragati Maidan to the Dhyan Chand Stadium, bike rally. So the bike rally is basically meant to create an awareness. And we are all influencers in our own particular fields. So until unless we promote this, nobody is going to do anything for this country. If we are there, we should express our patriotism for the country by hoisting the flag in our home, in our offices, everywhere, and take a selfie. And selfie, please upload it hargartiranga.com. Thank you. Ma'am, it's great hearing you out. But as I said, being an anchor, how can I miss an opportunity to even understand certain more facts? Ma'am, globally, जिस तरीके से इन challenges को हम अभी तक ग्लोबल मंच पर डिस्कस करते आए हैं, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब प्रधानमंत्री ने लाइफ को लेकर मंच पर बहुत सरल शब्दों में इस इनिशिएटिव के बारे में समझाया था. तो ग्लोबली सभी रिनाउंड, मैं कहूंगी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबने अप्रिशिएट किया कि किस तरीके से भारत इसको लेकर ये एफर्ट ले रहा है. मैम, उन चैलेंजेस को ग्लोबल मंच पर ले जाकर लोगों को उस हकीकत के बारे में समझाना कितना मुश्किल हो जाता है भारत में बैठते हुए उन चैलेंजेस को ग्लोबली डिस्कस करना और ये समझना और समझाना भी कि भारत का आम नागरिक भी किस तरीके से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है जिस चेंज में. I think the biggest ambassadors for doing this is our Indian diaspora. Yeah. So and most of them, if you will find, through their own traditional festivals and all, they are sustaining these environment-friendly lifestyle patterns, especially abroad. And our missions also, they are working towards this goal, because our missions are basically the ones who who are able to propagate in other countries what our policy is. Right. And ma'am, in fact, the other fact is कि ऑर्गेनिक या हमारी धरती से जुड़ी जितनी चीजें हैं, उन्हें हम ना सिर्फ ग्लोबल मंच तक ले गए हैं, बल्कि उनको अडैप्ट हम खुद भारतवासियों ने भी बहुत बड़े स्तर पर कर लिया है. अग्री करती हैं उमा मैम इससे? या हम एग्री करते हैं. मैं पहले से भी बता दिए हैं आपको, ये बड़े स्तर पर जाती है, छोटे छोटे स्तर पर से हम स्टार्ट करते हैं. एक तो मेरा हिसाब से पाठशाला और दूसरा हिसाब से घर. ये दो चीज़ जब तक हम सुधरेंगे नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है. वो तो हो भी रहा है, ऐसा बात नहीं है. अब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बाइक में ट्रैवल करते हैं, पॉलिथीन फेंकना बाहर या चिप्स से पैकेट फेंकना, ये जो अवेयरनेस जो है कि जब तक एज ए पेरेंट्स वी डोंट फील, until unless we don't teach our children, until unless a teacher teaches the
students. The change, it comes automatically over a period of time. It's not that today I say something, tomorrow onwards the world is going to change. It's not that. So things are changing and things will change, and the change has already started. अमिता मैम, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आप जिस स्तर पर एक मुहिम की शुरुआत करते हैं, आपकी सोच और उस सोच को अमल में लाने के लिए किस तरीके से उस थॉट पर आप काम करती हैं? There are a few things, you know, which all the various institutions are doing. हम लोग दो चीज़ों के ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हैं. एक तो ये है कि जैसे वैनिशिंग आर्ट्स की जो मैंने बात की, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ये तभी सस्टेन हो पा सकता है जब नेक्स्ट जनरेशन उसको टेकअप करे. और स्पेशली जो आप ये देखेंगे कि ये जितने भी ट्राइबल आर्ट्स या हमारे फोक आर्ट्स हैं, वो लेबर क्लास, फार्मर्स, ये लोग करते हैं. तो बट उनकी नेक्स्ट जनरेशन वो ज़्यादातर अब माइग्रेट कर रही है सिटीज़ के लिए. तो हमें कैसे उसको एक सस्टेनेबल बनाना है ताकि वो भी नेक्स्ट जनरेशन भी ये कहे कि ठीक है, हम ये जो कला है इसको हम अडेप्ट करेंगे और हम उसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से करें, ताकि जो अभी मॉडर्न टाइम्स में वो उसको हम थोड़ा और प्रिजर्व करें, लोग उसको खरीदें और उसको सस्टेन करें. और मैम, डिजिटल दुनिया के साथ जुड़े युवा उसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं. हाँ बिल्कुल, ये भी है. बट मैं मुझे कई बार बहुत खुशी होती है कि जब हम कुछ इस तरह के कैंप्स या प्रोग्राम्स करते हैं तो उसमें यूथ पार्टिसिपेशन काफ़ी होता है. दूसरा हम लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन. सो इन जो भी इस तरह की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स हैं उसको डॉक्यूमेंट किया है. एक जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ट्राइबल्स का 1 साल तक करके उनके साथ रह के और उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है. तो उसमें इनफैक्ट नेशनल फिल्म अवार्ड्स में एक डॉक्यूमेंट्री को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एकेडमीज़ हो जो उमा देखती हैं, जोनल कल्चर सेंटर्स हो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, सारी इंस्टीट्यूशंस मिलके, म्यूजियम्स हैं हमारे, वो इसको जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं जो कल्चर के, उसको हम लोग प्रोपगेट कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ज़रूर उसको अपनाए. उमा मैम, ये मैं इसलिए भी सवाल पूछा था क्योंकि जब हम इन इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ते हैं और जब हम प्रधानमंत्री को मंच पर देखते हैं तो वो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जिस तरीके से वो उसे समझते हुए आम जनता के बीच लेकर जाते हैं, उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ. क्योंकि जब हम देखते हैं वो कहीं जाते हैं तो उसी ट्रेडिशनल अटायर में भी नजर आते हैं और जब उन्हें कुछ खास तोहफे मिलते हैं तो उनकी खासियत भी पीएम के माध्यम से ही हमें पता लगती है. Yeah, that's true. Again, thing is that जो हमारी दादी नानी जो खाना खाते हैं वो खाना ही अभी पॉपुलर है. जो हमारी बच्चों को भी हमको वही सिखाना चाहिए. ये जब तक हम लोग ये हमारी कल्चर को, हमारे रूट्स को स्ट्रांग नहीं करते हैं, कुछ की होने वाला नहीं है. ये तो मैं पहले से भी बता चुका हूँ, अभी भी वही कहूँगी. जो खाना पीना, रहना, सोना, ये सब चीज़ जो है कि भारतीयता, ये सब में झलक आना चाहिए. ये सब हम आपसे अनुरोध करते हैं, सभी यहाँ पर जितना भी लोग मौजूद हैं, ये सब हमको, आपको, सबको मिल के ये काम करना है. जितनी अच्छी ट्रेडिशंस है, जितनी अच्छी वैल्यू सिस्टम्स है हमारा, वो सब हमको कुछ भी नहीं भूलना है. उसको अच्छे से और जागरूकता देना है. देने के बाद ही हम वर्ल्ड में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, वी विल बिकम इकोनॉमिक पावर, वी विल बिकम द वर्ल्ड लीडर, ये सब रियलाइज होगा. For that, the best thing is a culture. Thank you. बिल्कुल. और मैम, अगर कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की टीम के साथ पीएम की मीटिंग होती है तो प्लीज बता दीजिए कि उनके साथ इंटरेक्शन इन चीज़ों को लाने में कैसा होता है. मैं जानती हूँ बिहाइंड कैमरा हमें बहुत मौका मिलता है ये चीज़ें सुनने और समझने का, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से कॉमन मैन तक पहुँचने के लिए वो अपने थॉट्स रखते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी तो आप ही के पास होती है. आपको यदि काम में तो आप तो देखेंगे, ताजुब होंगे. हम लोग लास्ट 2 years में आई थिंक यदि हम लोग ट्राई नहीं किए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, कर देते तो मिल जाते हैं. मोर देन 12 लाख का प्रोग्राम्स हो चुका है, देश भर का प्रोग्राम्स है. हमारी मेन एम है हमारी कल्चर को, हमारी देश को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे ट्रेडिशंस को, सबको जागरूकता देनी है, लोगों के तक पहुंचाना है. बी इट द लिटरेरी फिगर्स, बी इट द ट्राइबल्स, बी इट द चिल्ड्रन, बी इट द विमेन, every section of the society, we are addressing that. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was great pleasure having you with us. चलिए, जिस तरीके से हम खास जानकारियां ले रहे थे उन्हीं तमाम इनिशिएटिव्स को लेते हुए, हर घर तिरंगा
एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव अभी तक रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग हमेशा पिछले साल भी उत्साहित होते हुए ना सिर्फ अपनी तस्वीरों को हर माध्यम पर शेयर करते आए हैं, वहीं देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद से ही हम सभी आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले साल हमने ये अमृत महोत्सव में बड़े ही भव्य रूप से देखा कि लोगों ने कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के हर घर में तिरंगा भी लहराता हुआ नजर आया, और इस बार भी देश की 77वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी एक बार फिर से देश की आन बान और शान को बढ़ाएंगे। एक बार फिर से हम सभी को हर घर तिरंगा फहराना है। आइए उन ऐतिहासिक पलों को एक बार फिर से हम दोहराएं, एक बार फिर से हर घर तिरंगा फहराएं। And in between, let me just tell you, I have an update that we'll be having Meenakshi Lekhi ma'am joining us any moment soon. And I think जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, we have youngsters here with us. Is it, I think, the good time to even interact with them if my team allows me to interact with these students? Because ये जो एफर्ट और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसमें हमारे यंगस्टर्स जिस तरीके का एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और यही वजह है कि जब इस खास एफर्ट और इनिशिएटिव में कोशिश की जाती है ज्यादातर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तो मैं इन युवाओं के पास जाने से पहले सिर्फ एक बात आपसे समझना चाहती हूँ। आप जब बनारस में गंगा को सुधारने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए ये एफर्ट इनिशिएटिव लेते आए हैं, उसमें हकीकत क्या है? युवा आपकी बात समझ पाए, आपके साथ जुड़ पाए? बिल्कुल, हमारे युवा निश्चित रूप से हमारे सहयोगी बन के आज सामने आए हैं, और युवा शक्ति आज इतनी मजबूत होकर के भारत के साथ खड़ी हुई है। और वही गंगा मैया की संरक्षण में भी यदि युवा शक्ति अगर आगे आए, पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए, तो निश्चित रूप से ये हमारे पर्यावरण के हित में होगा। और युवा शक्ति जब किसी अगर जुड़ती है यदि किसी प्रयोजन में, तो निश्चित रूप से ये बहुत फलदायक और लाभदायक होता है। हमारे साथ जिस तरीके से सभी लोग हैं, मैं सर आपका एक इंट्रोडक्शन चाहूंगी, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम एसपी सिंह है। सिंह सर, क्या सोचते हैं आज आप इस तरीके के एफर्ट और इनिशिएटिव को देखते हुए? एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी ज़रूरी है उसमें सबकी भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। हम लोग खुद सोलर इंडस्ट्री से हैं, सोलर इन्वर्टर्स बना रहे हैं, हम लोग पावर इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि छोटे से छोटी शॉप को गांवों में पहुंच के हमारी कंपनी का इनिशिएटिव यही है कि बहुत कम पैसे में छोटे जो गांव हैं, छोटी जो शॉप्स हैं, छोटी जो दुकानें हैं, वो कैसे एक पावर इंडिपेंडेंस अपने आप में ले रहे हैं। और हमारा आइडिया भी यही है। हमने कुछ एक दो कंपनीज, एक दो कॉलेज के साथ टीम लीज करके ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी CSR इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें जो बीटेक बच्चे हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं, कि उनको कैसे नौकरियों की तरफ ना जाके अपने बिजनेस की तरफ जाके बहुत कम पैसे के साथ काम करें और अपने शहर में काम करें और लोगों को पावर इंडिपेंडेंस दें, जिसमें अपन कार्बन एमिशन को खत्म कर सके और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को वो अपने शहर में, अपने गांव में उसको पॉपुलर कर सके। ऐसे बहुत बड़े एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स तमाम बड़ी कंपनियां भी ले रही हैं, लेकिन उन्हीं कंपनियों का जो मकसद होता है लोगों के लिए चीजों को, जरूरत को पूरा करते हुए युवाओं तक पहुंचाना। आप एक युवा हैं यहाँ पर, आपका नाम? नंदिनी। नंदिनी, क्या समझ पाती हैं आज इस तरीके के एफर्ट और इनिशिएटिव्स को जब आप देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप और हम एक ऐसा जरिया बन चुके हैं जहां हर प्लेटफॉर्म पर हम इनके लक्ष्य को समझ भी पाते हैं। एक्चुअली मैं पहले ये बताना चाहूँगी दैट आई वर्क फॉर पीस बिल्डिंग, एंड देन उसमें हमें ये समझ में आया है अभी तक काम करते हुए कि हम अगर सोसाइटी में हम बात करते हैं आपस में खुश रहने की और एक पीस बिल्डिंग माहौल आपस में रहे सोसाइटीज़ में, but we cannot achieve that without achieving environmental goals. If we don't conserve our environment, we'll always see some or the other conflicts coming up. We see all these floods, people getting displaced and everything. So that's a very big reason for all the conflict that we have in the society, and we feel we are trying to work towards, even as youth, we are trying to work towards, we have the whole team of youth with us, and then we continuously work on achieving peace building through environment, because that what we feel is like a very essential thing to look at, and not just separately environment or separately peace building, separately society. I think it all has to be together.
बाढ़ की आपने बात करी, पिछले 3 महीने से मैं रोजाना पढ़ रही हूँ कि बाढ़ की वजह से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। और ये मैंने इसलिए भी जिक्र किया क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस की बड़े बड़े मंच पर चर्चा तो सुनते आए हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में ये चर्चा किस स्तर पर होती है, ये मैं आप जैसे युवाओं से ही समझना चाहती हूँ। व्हाट्स योर नेम? दिव्यांशी, हाउ डू यू टेक ऑल दीज इनिशिएटिव्स एंड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप और हम अपने जीवन में कैसे क्या चेंजेस को अडैप्ट कर सकते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इंटरनेट से हो, एंड काफ़ी लोग एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल जनरेशन मिलेनियम्स हम इको फ्रेंडली ज़्यादा हैं, वेर इन वी प्रमोट ब्रांड्स और वी शॉप विद ब्रांड्स वो मोर इको फ्रेंडली एंड मोर सस्टेनेबल। एंड ज़्यादातर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स भी आप देखेंगे कि एक बहुत स्मॉल एज से यूथ स्टार्ट कर देता है या उसके साथ इन्वॉल्व रहता है, एंड वन सच इनिशिएटिव के साथ हम लोग भी इन्वॉल्व है, विच इज़ सस्टेनेबल भवा। एंड वी, जैसा नंदिनी ने कहा कि सारे गोल्स, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स सबको एक जैसी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, या फिर कमर्शियल डोमेस्टिक सेक्टर्स हो। एंड उसी पे हम लोग बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स को SDGs के बारे में पढ़ाते हैं, एंड लाइक यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल गोल्स एंड ग्लोबल एजेंडा। सो उस पर हम अपने उस पर कैसे बात करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट हु इज़ मेजरिंग इन एनवायरमेंटल साइंसेज, सो हम तो इसके बारे में पढ़ते ही हैं, बट साथ में गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल साइंसेज कंपलसरी कर रखी है, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि एक यंग एज से, एक टेंडर एज से बच्चे समझे। एंड बट what is more important rather than just compulsoring education, quality of education. सिर्फ 3 hours के बारे में ना पढ़ा जाए, reuse, reduce and recycle, but there are 5 hours which is refuse, refurbish, remanufacture, and we have to start talking about circular economy. So that is I think changing trends in global market, talking about sustainability, and sustainability को एक industrial point of view से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I have a question on that note with you, because हम वो generation है जहाँ एक और R का मैं जिक्र करूँगी, resources, और resources की कोई कमी नहीं है। उन resources की कमी ना होते हुए भी सिर्फ हमारी social life में चीज़ों को adapt करना बहुत आसान भी हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो शायद अभी तक हम नजरअंदाज करते आए हैं। ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है आपके आगे या हमारे आगे? आई थिंक ये एक मॉरल चैलेंज है फॉर एवरीवन, क्योंकि व्हेन आई वाज अ किड, लाइक आई वाज मे बी 10 years old, तो मेरे को एक बार मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड, व्हाट यू एक्चुअली नीड एंड व्हाट यू एक्चुअली डिज़ायर, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आपको हमेशा नए कपड़ों की, नए जूतों की, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है जस्ट बिकॉज दे आर अवेलेबल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमें वो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ये मेरा बिलीफ है। और हम सबके ऐसे ही बहुत सारे बिलीव्स हैं हमारी टीम में, सस्टेनेबल भवा में भी, इन विच हम स्कूल्स में जाते हैं और हम बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग, जहाँ हम उनको बताते हैं उनके थ्रू, हम स्टोरीज उनके अराउंड बनाते हैं, एंड वी गो टू स्कूल्स एंड टेक सेशंस, जहाँ हम यही चीज़ें उनको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो, टेकिंग एग्जाम्पल्स, फॉर्मिंग स्टोरीज अराउंड देयर एज, telling them real life stories like the people who are present, the 3 green warriors you talk about today. ऐसी स्टोरीज हम उनको सुनाते हैं। हमें आई थिंक थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। द एनवायरनमेंट इज़ वेरी प्रेशियस, प्रकृति हमारी माँ है, उससे लेना हमारा हक है, लेकिन उसको वापस देना भी हमारा फ़र्ज़ है। वी फॉरगेट दैट ऑलवेज एंड वी शुड डू दैट मोर ऑफन। एग्जैक्टली, बिकॉज जब आप स्कूली बच्चों के बीच में जाते हैं तो वो भले ही मंच पर आकर या इन छोटे छोटे एफर्ट्स के जरिए एक ऐसे के तौर पर ये बातें ज़रूर सामने रखते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम? अंशु। अंशु, क्या आपने ऑब्जर्व करा कि किस तरीके से उन चेंजेस को समझते हुए भी वो बच्चे अडेप्ट करने को तैयार हैं? और जैसा थोड़ी देर पहले मैम कह रही थी कि हर चीज़ की शुरुआत अपने खुद के घर से की जाती है, क्या वो अमल में आ रहा है? मैम यही कि नॉर्मल वो रिलेट कर पाते हैं। हाँ। वो रिलेट कर रहे हैं। हाँ, तो रिलेट कर पा रहे हैं, तो उसको वो समझ रहे हैं और तब वो उस पर अमल कर रहे हैं। ओके, आप भी इसी तरीके से लोगों के साथ जुड़े हैं एनवायरनमेंट को लेकर, स्पेशल कॉजेस को लेकर। आज जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जहां माई इंडिया माई लाइफ गोल्स के तहत अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजों को अडेप्ट कर चुके हैं जो आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। Sorry, can you repeat the question?
हम कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, नजरअंदाज करते हुए कि किस तरीके से वो आने वाले वक्त में भी हमारे लिए और हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, हम नजरअंदाज करते हुए आ रहे हैं। हम आसपास हम देखते हैं, हम दिल्ली शहर में रहते हैं, ओखला में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे गार्बेज के माउंट्स बने हुए हैं, पर हम उसको इग्नोर करके हम अपनी लाइफ जनरली जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हम जो कॉमन पॉपुलेशन है, जो मैं बात करता हूँ फील्ड में जाके, वो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स में रह के, अपनी ज़िंदगी में रह के, वो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को ना जानते हुए और वो अपनी इग्नोरेंस में रहना चाहते हैं। तो हमारा गोल ये है कि हम उस इग्नोरेंस को ख़त्म करें अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए। हम यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करके उनको बचपन से ही उनके दिमाग को प्रोग्राम इस तरह से करना शुरू करें जिससे हम उनको एक कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पैदा कर सकें कि वो फ्यूचर में जाके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें हमारे साथ, या फिर इंडिविजुअली जो भी जिस तरह से वो करना चाहें। और होपफुली ये हम होप ही कर सकते हैं कि वो इस दुनिया को बेहतर बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ युवाओं के साथ जो इस तरीके के एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स के साथ कुछ खास प्रोजेक्ट्स के जरिए यंगस्टर्स तक पहुँच रहे हैं। सर, ये सवाल अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्लीज़ सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आर.पी. शर्मा है और मैं कवि हूँ। और जो अभी बात हो रही थी घर घर तिरंगा, उस पर मैं अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल, तो यहाँ आ जाऊँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जो घर घर तिरंगा की बात हो रही थी कि घर घर तिरंगा है क्या, आज भारत की क्या स्थिति है उस पर है कि जहां घर घर पर आज लहराता है तिरंगा अपना प्यारा, वो भारत देश हमारा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहां मोदी जी अब राज चलाते, कावड़िए पहने माला, कावड़िए पहने माला। जन जन के जहां खाते हैं अब घर घर पड़ रही बाला, घर घर पड़ रही बाला। जहां गूंज रहा है गली गली अब जय श्री राम का नारा, वो भारत देश हमारा। जय भारती जय भारती जय। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शर्मा सर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल इंतजार हमारा खत्म हुआ है, क्योंकि अब हमारी खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए मीनाक्षी लेखी मैम का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स से MOS। मीनाक्षी लेखी मैम, thank you so much for joining us today. Thank you so much for your precious time, and I would please request you to please join us on stage. I was waiting for you, sir, as well. And thank you so much, ma'am. It's a pleasure having you with us, and a great initiative that we all have been discussing. Amit Tripathi, sir, I would request you to please join us. The Chief Revenue Officer, TV9 Group, Amit Tripathi, sir, please join us. And Group Editor, Digital, Panani Anand, sir, is on stage to welcome ma'am. And Editor Convergence, Deep Upadhyay, sir, your presence is required once again on stage. Round of applause, everyone, please. Thank you. It's great hearing you out today with all the initiatives and efforts that you've joined on this My India, My Life Goals lifestyle.